So in this class we are going to start a very important topic of class 12 which is known not for profit organization. So आज के क्लास में और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ द बेसिक थ्योरीज रिगार्डिंग ऑफ इट. So first of all, before understanding or before getting the point of not-for-profit organization, we should know the meaning of little bit about the organization. So organization means an entity. Organization means an establishment. Organization का मतलब होता है कोई भी जगह जहाँ पे means an entity और organization means an establishment which is formed by the person or by a person और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेस. जो भी इस्टेब्लिशमेंट कोई कारण से बनाया हुआ हो पर्सन के द्वारा, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली रेफर्स टू द इस्टेब्लिशमेंट और एन एंटिटी व्हिच इज ओपन बाय द पर्सन और व्हिच इज ओपन बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर फुलफिलिंग सम ऑब्जेक्टिव्स और फॉर फुलफिलिंग सम पर्पजेस. सो नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज हियर. First of all, it is a trading organization. So trading organizations are those organizations which basically deals with manufacturing. It means that this organization buy the raw material from the market, manufactures it, and after manufacturing it, it resell to the public. So this organization basically refers to the manufacturing organization, and the main motive of this organization is to earn the profit. Whereas second type is the non-trading organization. So non-trading organization means those organization or those establishment which are not engaged with manufacturing. Means these organizations is not going to manufacture the goods. They basically provide the services to the society or services to the public. So now see, not trading organization or non-trading organization is also divided into two categories. One is profit seeking organization and another is not for profit seeking organization. जो भी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोवाइड द सर्विसेज. अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट्स. वन इज प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स दिस इट मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट. जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करता है लेकिन उसका बेसिक पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. एज फॉर एग्जांपल चार्टर अकाउंटेंट, एज फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंट, एज फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी. तो दिस आर द पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सोसाइटी बट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग सम इनकम. सो दिस इज known as profit seeking organization. Whereas non-profit seeking organization or not for profit seeking organization means those organizations which provide the services to the society, but here the intention is not to earn the प्रॉफिट फ्रॉम द पब्लिक. ये वो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन इन लोगों का नहीं होता है. जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, trust, societies, temples, church. So these are the examples of the not for profit organization. So यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन एंटिटी और इस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज ओपन बाय ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पजेस. ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन and another is non-trading organization. Trading organization means those organizations basically related to manufacturing the goods. They purchase the raw material from the market, they manufacture it or produce it, and after that they sell it to the public with the intention of the earning income. Next one is the non-trading organization. Non-trading organization means this organization not engaged with the manufacturing or producing some goods. They basically provide the services to the societies. So non-trading organization again classified into two categories. One is profit seeking organization and another is non-profit seeking organization. So profit seeking organization means those organizations who provide the services to the society with the objectives of earning profit, and non-profit seeking organization means this organization also provide the services to the societies but here the intention
that they are not going to earn any profit from the or any they are not going to earn any income from the public. So this is all about the organization and types of the organization. Next come to the our main topic, which is not for profit organization or non for profit organization. So first of all the features. So features में क्या लिखा है? First is voluntary association. So what do you mean by voluntary association? Voluntary association means this organization formed by the public which is voluntarily come. They are not requested to come, that you have to come and you have to form the organization. Those who want to join that organization, they can easily come and they can easily go. Next one is the objectives. So the very important features of this organization is that this organization provide the services. This organization provide the services to the societies without intention of earning any income or profit. Next one is entity. Entity here means separate entity. Separate entity. So it means that the persons or the members who form the organization, they are that persons and the organization are two separate entity. Some, as for example, me as a person, organization में कोई भी मंदिर में मेरा नाम लिखा हुआ है, I am the member of that particular temple. I may not be alive for 1,000, for 100 years, but the organization will remain open for all the societies. So this is the example of not separate entity. Next one is sources of fund. What do you mean by sources of fund? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कोई भी तो सोर्सेस चाहिए ना, कोई भी फंड चाहिए. तो sources of fund is the means the fund where from the organization gets the money and run its workings. The main sources of the fund is subscriptions. Subscription is the main source of fund. Subscription means the members who are engaged with that particular organization, they have to pay certain amount of money after each and every interval. Money ki ek hafta means the amount which is paid by the members of the organization after a periodical interval. Suppose I am a member of any particular temple, so I have to pay certain amount of money after each and every interval, maybe after a week, after a month, quarterly, half yearly or yearly. Whatever amount paid by the members after each and every interval, that amount is known as the subscription. Next source में क्या आता है? डोनेशन. डोनेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डोनेट कर दिया, कोई भी चीफ मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर आया, आप आने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डोनेशन किया है, दैट इज ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ द फंड. नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी पैसा हुआ है, उस पैसे को आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा है, तो उसमें से जो भी इनकम आएगा, दैट इज ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ फंड. एंड द लास्ट वन इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए देयर शुड बी ए एसोसिएशन ऑफ बॉडी. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए देयर शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ बॉडी. मीन्स the organization should be run by a group of body which is known as executive committee or governing body. So there should be management of the organization. So these are the features of the not for profit organization. First one is the voluntary association. Voluntary association means it is a association of a person. Next, objective. Second features is the objective. Objective means here the objective of the organization is to provide the services to the society, not to earn the profit. Third one is the separate entity. It means that the organization and the members are the two distinct persons. The members may not be alive for a years, but the organization will run after 100 or 200 or 300 years also. Next one is the sources of fund. Sources of fund means the fund where from the organization can get the money and they can run its workings. Next one is the management. So for running the organization in a well-designed manner, there should be a management who manage the organization, who manage the workings of the organization. So this is all about this topic: organization, types of organization, meaning of all this, and the features of the not-profit organization. Next, come to the next one, that is called the finance prepared by the not-for-profit organization. तो हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है. जैसे कि हम लोग कंपनी में सीखा था, फिनेंशियल स्टेटमेंट जब भी प्रिपेयर करने होता है तब हम जाके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे. वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मतलब हम लोग को 3 स्टेटमेंट बनाना है, 3 अकाउंट बनाना है. फर्स्ट वन इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज द बैलेंस शीट.
नाउ कम टू द लेट अस नो द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस थ्री रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ द कैश बुक. It is just like a cash book. It is just like a cash book, but here we have to write the summary of any heading. Suppose cash book क्या होता है? Cash book is a book which is maintained by the organization on a daily basis. मानिए कि एक महीना का, हर महीने का सैलरी होता है, तो हर महीना में हम लोग सैलरी शो करते हैं. जनवरी का सैलरी सेपरेट, फरवरी का सैलरी सेपरेट, तो मार्च का सेपरेट. वैसे ही हर महीना जब आप सैलरी पेमेंट करते जाएंगे तो डेट वाइज वो सैलरी हम लोग लिखते जाएंगे. लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा साल के एंड में बनाया जाता है. तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड हियर वट एवर आइटम you are going to write, that item should be written by adding the expenses. मान के चले कि सैलरी आपका 12 महीने का है, हर महीने आपका 1000 1000 1000 करके आपने कैश बुक में लिखा. लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब भी लिखेंगे हम लोग सैलरी का एक साल का कितना हम लोगों को पेमेंट किया हुआ है वो पूरा पैसा हम लोग टोटल करके लिखेंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द समरी ऑफ द कैश बुक. एज लाइक द कैश बुक, व्हाट एवर इनकम यू आर गोइंग टू रिसीव, जो भी आपको कैश मिले हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और जो भी हम लोग को पेमेंट हुआ, हम लोग जो भी कैश पेड किया वो सारा हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे. रिसेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक, बट हियर द मेन थिंग इज दैट हियर all the items, whatever items you are going to write, that item should be written in by making the total. So, आपको टोटल करके ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है. नेक्स्ट, the receipts and payment account is basically prepared to find out the cash position of the particular organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से आपको कैश आया और कहाँ आपका कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो जानने के लिए भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है. नेक्स्ट वन इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनाते थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से क्या जानते थे, प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग को पता चलता था कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ एक साल में, या बिजनेस में कितना लॉस हुआ. वैसे ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के द्वारा हम लोग को जानेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आपका सरप्लस है व कितना पैसा आपका डेफिसिट में है. सो दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑल द रेवेन्यू आइटम्स हियर आर recorded, whether it is a revenue receipt or revenue payment, that are recorded in this account, for the purpose of finding out whether the organization has surplus amount or not, or is there any deficit amount. Last one is the balance sheet. Balance sheet shows the financial structure or financial position of that particular organization. So this is all about the receipts and payment account, income and expenditure account and the balance sheet. तो याद रखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, थर्ड वन इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आए कि व्हाट आर द वेरियस फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू राइट दिस थ्री. नाउ from we are try to understand how the receipts and payment account is prepared. In the next class we will try some practical section. So receipts and payment account, as I have said that receipts and payment account is just like the cash book, but in this case in cash book we record the items in year in date wise. आज के डेट में जो भी खर्चा होगा, सपोज आज के डेट में हमने किसी को सैलरी दिया तो वो सैलरी हम लिखेंगे. एक महीना बाद हमको फिर से सैलरी देना है तो वही डेट लिखेंगे, वही डेट लिख के हम लोग वो सैलरी देंगे. उसके बाद भी जो सैलरी होगा उस डेट लिख के हम लोग वो सैलरी लिखेंगे. लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि बार बार आप सैलरी नहीं लिख सकते. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक साल में सैलरी के नाम पे कितना आपने पेमेंट किया था वो डायरेक्टली आपको टोटल करके लिखना होता है. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस. हमेशा ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, आइदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और दोनों. अगर क्वेश्चन में दोनों दिया है तो दोनों स्टार्ट करेंगे. और अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नया हो, if your organization is the new organization, in this case there will be no opening balance. So ये आप लोगों का ये पॉइंट
आपका ऑर्गेनाइजेशन नया है, इसका मतलब देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस, हेंस इन दैट केस देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पुराना है और ओपनिंग में आपका कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उस टाइम पे प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल कैश रिसिप्ट आर recorded on the debit side and all cash payments are recorded on the credit side, as receipts and payment account basically prepared on cash basis। receipts and payment account basically prepared on cash basis, मतलब जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो हम लोग receipts and payment account में लिखेंगे। we are not going to classify or we are not going to justify whether this cash related to the previous year or this cash payment related to the next year। it doesn't mean if any cash comes to your organization, in this case you have to write। अगर कोई भी पैसा इस साल का पैसा इस साल में मिलने से भी लिखेंगे, लास्ट ईयर का पैसा भी अगर इस साल में मिला तो भी लिखेंगे, या अगले साल का कुछ पैसा मिलने वाला था वो पैसा एडवांस में हमको किसी ने दे दिया तो भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश से मैटर करता है। तो कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। जितना कैश आपके पास आएगा, जैसे कि कैश बुक में हम लोग लिखते थे, जो भी कैश हम लोग के पास आता है वो हम लोग कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। सेम केस में जितना भी कैश आपके पास आएगा वो भी हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखेंगे। और जैसे जिस तरह हम लोग कैश बुक में जो भी कैश पेमेंट करते थे वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, इन द सिमिलर वे व्हाट एवर कैश यू हैव पेड, so that paid amount should be recorded on the credit side, that means payment side on the receipts and payment account. Next, it is prepared on cash basis, as I have told earlier, receipts and payment account is prepared on cash basis. Now it ends with closing balances of cash at bank or bank overdraft। तो receipts and payment account हमेशा स्टार्ट होता है किससे, हमेशा स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और बोथ और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराना हो तो, और ओपनिंग बैलेंस अगर रहा तो। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा वेदर इट इज़ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो जितना भी आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा वो हमेशा आपका क्लोजिंग बैलेंस से ही खत्म होगा। मान के चलो कि आपके बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस था नहीं तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं होगा, लेकिन अब जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप क्लोज करेंगे, जब आप क्लोज करेंगे तो इस साइड में जाके आपको कुछ बैलेंस बचेगा। वो हो सकता है आपका बोथ साइड इक्वल हो जाए, तो बोथ साइड इक्वल होने से कोई बैलेंस नहीं है। अगर बोथ साइड इक्वल नहीं हुआ तो डेबिट साइड में भी कुछ बैलेंस निकल सकता है, बैलेंसिंग फिगर, या क्रेडिट साइड में भी कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, अगर पेमेंट साइड ज़्यादा हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा हुआ तो जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग को लिखना है क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से। एंड द लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट नेवर रिकॉर्ड्स द नॉन कैश आइटम्स। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसा इनकम जो आपको मिलने वाला है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज द इनकम इज नॉट रिसिप्ट येट, आपके पास कैश आया नहीं। कोई भी ऐसा पेमेंट जो आपको फ्यूचर में करना होगा वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। कोई भी ऐसा नॉन कैश आइटम, मान के चले डेप्रिसिएशन, एक्विजिशन, आउटस्टैंडिंग, ये सब आइटम आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा नहीं। डेप्रिसिएशन मीन्स इट इज एन एक्सपेंसेस, बट डेप्रिसिएशन डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू लूज योर मनी, आपका बिजनेस से क्या चला जा रहा है ये वो तो नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पैसा आपको देने वाला है, पैसा आपको देना है, किसी को सैलरी देना है, लेकिन आपने पेमेंट तो किया नहीं, इसका मतलब ये पेमेंट आपके बिजनेस से कैश गया ही नहीं, तो इसका मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये आइटम भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।